kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 25 Times of Adverbs. Okay, let's start now. Adverb tells us how something happens or how somebody does something, when, where, or how many times these show manner, time, place, and frequency. Okay. An adverb is a word which adds to a meaning of a verb, an adjective, or another adverb. For example, a tortoise walks slowly. Now, the sun is quite hot. And next, Lisa writes very neatly. Okay. Now, there are the six kinds of adverbs. Number first, adverbs of manners. Answer the question say how. Some adverbs of manners are slowly, carefully, badly, hurried, effectively, with care. The leader spoke polite. Okay. Next time, adverb of place. Answer the questions where. Some adverbs of place are there in the park, at the airport, and outside. For example, the train does not stop here. Okay. Next, adverb of time. Answer the question when. Some adverbs of time are now, soon, yesterday, today, tomorrow, on Monday. Example, he has come yesterday. Adverb of frequency. Answer the question है how often. Some adverbs of frequency are twice, daily, often, never, always, frequently, regularly. Example है I do exercise daily. Next है adverb of degree or extent or quantity. Answer the questions है in what degree, to what extent, or how much. Some adverbs of degrees are partly quiet. Example है she was partly wrong. Next, interrogative adverbs are used to ask questions. Some interrogative adverbs are why, how, when, where, how far, etc. Okay. Example है how far is Mumbai from Kolkata? Okay. Now we do the exercise. Underline the adverbs and write what kinds they are. जैसे very quick, you give very, बहुत. तो बहुत कौन सा हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर. इसी तरह है द फ्लावर्स शब्स ग्रो स्लोली. स्लोली क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर. Okay. Now face left exercise. You do yourself. Next है adverb of manner का है. Adverb of manner tells us how or in what manner something happens or how or in what manner somebody does something. Okay, example है the sun shone brightly. It is rainy heavy. The laborers worked hard and the pinky danced well. Next week, the child sleeps soundly. The little boy runs fast. Most adverbs of manner in ly. जो adverb of manner होते हैं वो mostly ly पर end होते हैं. Next है adverb of time. Adverb of time tells the time of an action. Example today, yesterday, tomorrow, now, then, soon, late, early. Okay. That's called the adverb of time. Okay. Now kids, we do the exercise है. Fill in the blanks, correct adverbs हैं. She knits. वह क्या बोलती है knits fast.
उसी तरह द यंग मैन वॉक क्या करता है? चलिए पहला है शी नीड्स द बुनती है कैसे? क्विकली। द यंग मैन वॉक कैसे करता है? फास्ट, तेज। सो इज साइकिलिंग, सम क्या है? साइकिलिंग क्या होता है? वेल अपना हिल, बहुत अच्छे से चला रहा है साइकिल। ओके, नाउ फेस लेफ्ट एक्सरसाइज योरसेल्फ, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स। जैसे सी नेवर टेल्स अ lie. He visited American. He visited American. घूमने गए थे लास्ट ईयर। रीता often goes to Hong Kong. Okay, next time. Interrogative adverb. Interrogative adverbs are used to ask questions about place, time, reason, manner, or way. Where is used to ask about place. Where are you going? So we are going to the zoo. Okay. Next, where is the girl? So the guy is on the bed. Next time, that. When is used to ask about time. When do you go to school? तुम स्कूल कब जाओगे? तो हम बताते हैं 7 o'clock. उसी तरह when do you play? कब खेलोगे? तो play in evening. Okay. Next है why का यूज करेंगे? Why are you drinking tea? तुम चाय क्यों पी रही हो? Because I am tired. Why are you climbing up the tree? पेड़ पे क्यों चढ़ रहे हो? Just for fun. केवल मैं फन के लिए। हाउ का यूज करेंगे मैनर और वे के लिए, जैसे हाउ डू यू गो टू योर स्कूल? तो आंसर है माय फादर ड्राइव्स मी टू स्कूल इन अ कार। नेक्स्ट है हाउ डू यू मेक सच अ डिलीशियस केक? तो स्टैंड हियर एंड वॉच मी। नाउ किड्स we use we do the we do the practice time. Will you go to the concert? Then कब करोगे? कंसर्ट कब करोगे? उसी तरह डिड यू बाय दिस पेन? तुमने पेन कब खरीदा या कहाँ से खरीदा? कहाँ से लिया? तो फिर इसके बाद लव समझ तुम इतना क्यों हंस रहे? तो हाउ। ओके, नेक्स्ट डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स like adjective adverbs can have comparative and the superlative forms. Some words are used as adjective and adverbs, both their comparative and superlative forms are the same. Number first है adverb of one cyber from their comparatives by adding er और superlative में add करते हैं est. ओके, जैसे पॉजिटिव है हमारा फास्ट, कंपेरेटिव फास्टर, सुपरलेटिव फास्टेस्ट। उसी तरह हार्ड का हार्डर और हार्डेस्ट। ओके, नाउ सम एडजेक्टिव फ्रॉम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एन इर्रेगुलर वे, जैसे विल, गुड का बेटर एंड बेस्ट, बेड का वर्स एंड वर्स्ट, लिटिल का लीस एंड लेस, far ka farther and farthest. Okay. Now, adverbs ending in ly from their comparative is superlative by adding more and most, respectively. For example, quickly, more quickly, and most quickly. Okay. Now, study the following example है walk fast. The train has already arrived. Okay. Now, the practice time. Write the correct degree of the adverbs given in the brackets. She writes. Then आ रहा है तो क्या आएगा? Neat. Neat. He writes neatly than David. Okay. उसी तरह your dress is क्या है? जैसे nicely को tailored. Your dress is nice.
ये ड्रेस बहुत अच्छी है तो क्या लिखेंगे? बहुत अच्छी है तो क्या लिखेंगे? मोर नाइस। योर ड्रेस इज मोर नाइस। आई अराइव देन यू। देन आ रहा अपेक्षा कंपेरेटिव हो रहा है तो यहाँ पे भी लिखेंगे आई अराइव्ड सूनर देन यू डिड। नाउ राइट द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडवर्ब गिवन द ब्रैकेट्स। जैसे शी राइट्स देन आ रहा है तो ये होगा कंपैरिजन हो रहा है किससे? नीटली। तो क्या आएगा? मोर नीट। मोर नीट। ज्यादा साफ लिखते हैं डेबिट से। उसी तरह योर ड्रेस इज, क्या बनेगा? नाइसली का। सिंपल है, द ड्रेस इज नाइस। ओके, नाइस टेलर। आई अराइव देन आ रहा है तो क्या आएगा? सूनर। आई अराइव सूनर। उसी तरह संद्रा सिंग्स वेल। और वेल का क्या आएगा? द संद्रा सिंग्स वेल। और फुल में आएगा सिंग्स द वेलेस्ट ऑफ ऑल। ओके, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.